सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध 69वां सर्ग का विचार कर रहे थे। वशिष्ठ जी राम जी का सवाल का जवाब देते हुए बोले थे कि शरीर का नाश होने से प्राण अथवा मन का नाश नहीं होता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इन तीनों उपायों में मनोविनाश ही मुख्य साध्य है। मन का विनाश ही हमारा लक्ष्य है। और ये 3 किस्म का उपाय, 3 उपाय क्या बोले थे? एक तो परमात्मा का चिंतन, उसमें दृढ़ अभ्यास, प्राणों का मतलब प्राणायाम के द्वारा प्राणों का विलय करना, और मन का निग्रह करना। ये तीनों उपाय सिर्फ एक मनोनाश के लिए है। मन का निग्रह और मनोनाश में अंतर है। मन का निग्रह करना, उसको बस में करना, और नाश करना पूरा मन खत्म होगा। So to the answer of the question of Rama, Vasishtha ji said, all these 3 ways, methods
that is the constant meditation on the absolute and being established on it, and the second is to practice pranayama and to control the prana and control of mind. These three ways are only done for one goal, that is destruction of mind. Mind should be destroyed from its root. तब वे भूत मात्राएं बाहर के अन्य जीवों के प्राणों के साथ संबंध क्यों नहीं होती? तब वे भूत मात्राएं बाहर के अन्य जीवों के प्राणों के साथ संबंध क्यों नहीं होती? इस शंका पर कहे कि तत्त जीव वासना मात्र स्वरूप वे भूत मात्राएं हैं। अतः उक्त वासना वाले मनोविशिष्ट प्राणों से ही वे संबंध होती है, दूसरों से नहीं। अतः उक्त शंका का प्रकृति में कुछ भी अवसर नहीं है। Then there was another question. The question was, if prana remains, then why not the prana of one person makes relation with the prana of others by the tanmatras. Tanmatras, they are subtle elements. So, when the prana, after the death, when the prana gets out with the mind and other eightfold body, it goes out in the subtle, to the subtle world. So naturally, they should contact with, they should have relationship with the subtle prana of other beings. Does it happen? No. Why not? Because prana is one. So all these tanmatras, the subtle elements, they should contact the other beings in the subtle world. Do they? No. Everybody is different. So why not? So our Vasudji replies, this question is not concerned with this subject. Don't put questions which are out of the way. He became a little strict. What are you asking? You say, why not? So he explained, our common understanding is the birds of same feather get together, isn't it? The crows will not sit in the group of the cranes. Never it is seen. Similarly, there is possibility of contact in somewhat similarities. This is the formula. Somewhat, why somewhat? Why not total? Total similarity cannot remain as different from each other.
there will be only one. Two cannot remain as 100% equal to each other. They cannot go parallelly. There is one government only. There is no parallel government. So, the similarity means somewhat similarity. For example, say 45% and 55%, they can mix together. And that contact or association will be for some time, because they are not totally similar. So for some time, in this way we have contact with each other for some time. It is not eternal. Not only among the elements, but also the beings. Every being is different from each other. Difference is the law of nature. We cannot have similarity anywhere, 100%. The law is, if two are similar to each other 100%, then they will not remain as two, they will be one. This formula also is applied to our liberation. When you go on thinking of the Absolute and you forget totally 100% your being, means your identity, your ego with fourfold mind and prana, body, senses, everything you have forgotten. Because you are continuously thinking of the Absolute and you have forgotten the world, I and my. So what happens then? Your being and the Absolute Truth, they become 100% equal, so you lose your contact. There is another logic also. According to that logic, the creation is not at all possible. How it is? There is no creation, logically. Analytically, of course, whatever we see, the cause of it, and cause of the cause, and then cause of the cause of the cause. In that way, when you go to the absolute primordial cause, then that will be one only. And that one will be causeless cause, because there is no relativity. That is absolute one without a second. So when there will be two, then only there will be relativity, cause and effect, action and reaction, all these formulas are applicable. Now when absolute one is there, whatever becomes one with it, they have to lose the contact of others. Others mean their separate identity. This formula is applicable to, that is called our liberation. This formula also is applicable to your black hole theory, according to the modern scientists. Whatever enters into black hole, it loses its identity. There is no time, there is no space, there is no causation, there is no two. So, the end of the black hole is called absolute singularity without a second. So, indirectly you admit you agree to our philosophical conclusion, that is the absolute truth. That is also one without a second.
Is there any difference in the meaning? If I say one without a second and next is absolute singularity, is there any difference in the meaning? But we have to keep apart because you are scientists and we are philosophers. If you agree to us, then you are outcasted. Anyhow, in this way, this formula is applicable everywhere. Two similar 100% identities cannot remain separate. This is how Basitji is explaining. You see, when there is difference, there cannot be contact. And you said now, somewhat similarities will have contact. What is, how do you contradict yourself? It is not contradiction. Too much difference will not have contact. Somewhat difference will have contact. And then you will ask what is the measure, how much, then you know how much or this much. Nobody knows the secret of the nature. It is beyond our mind, because mind itself is the nature. So when you go beyond mind, you can understand it. This is the only way. Okay? When you are sitting inside a room, you cannot know all about the whole building. Never it can be so. When you go out and you will have an all-round vision, out and in, this side and that side, up and down, everything at a glance, then only you can have all the knowledge about the building. That is possible when you are out of the building. Too high to capture it in a all-round vision. This we have discussed yesterday also. So, Basitji says this question is not relevant here. दूसरे शरीर में जो प्राण उत्पन्न होते हैं वे पूर्व शरीर की वासनाओं से युक्त होकर ही उत्पन्न होते हैं. For some time, there is no exact period of the time in the subtle world for the departed soul. Departed soul remains in the subtle world by the force of their previous tendency, push, that is, the vasanas, the desires, subtle desires, and the actions and reactions. That is the method of multiplication. Everybody is bound to be in this way. So, what happens? Your previous desires and actions and reactions, they will have a push to your subtle body, to the subtle world. And in that subtle world, and how much subtle it is, there is no measurement. Such questions are not to be asked, because it is said once, it is
beyond your understanding. Just accept somewhat for some time, and this is the method. Only overall view, no exact anything. Gahana karmana gati. Nobody can exactly say what is the way of karma, how the reactions happen to the actions. Because it is subtler than the so-called mind and intellect, everything. This is how, because of that force, the subtle body enters into the subtle world and it remains for some time there according to the previous karmas, and when the time comes, it wants to have a gross body again, to still go on in the eternal journey by multiplying process. If it gets a gross body, then it will go on doing actions, and it will have some reactions, and then it goes on in the eternal cycle of birth and death. That is what commonly happens to everyone. And that gross body of that some subtle body, when is made, it is according to the previous actions and reactions, means desires, subtle desires, which is stored in the subconscious mind, in the seed forms, in the impression forms. They will fructify. Fructify means multiply. Multiply means they have to have a gross body, and that gross body is according to the choice of the karmas of the particular being. In that way, those bodies will be not similar, they will be different from each other. And in this way, all these bodies are classified into 84 lakhs of species. 84 lakhs yonis mean different kinds of bodies. Can you imagine? In those bodies also, there will be again some differences. Difference cannot be deleted. So in this way, the journey of the eternal journey of the soul, that is called evolution process according to scientific terms. और पूर्व देह का जो परित्याग करते हैं, वे भी भावी देह की वासनाओं से युक्त होकर ही परित्याग करते हैं. When you step ahead while walking, don't you think of the step behind? That is the common process. Without thinking of behind, how can you progress ahead? So similarly, the bodies of future ones are according to the previous bodies. So the link is continuous. देहांतर में उसके हृदयाकाश और उसके अंतर्गत वायुओं से उस प्रकार श्लिष्ट होते हैं
जिस प्रकार पुष्पों की गंध तिल में प्रविष्ट होकर तेल के साथ क्लिष्ट हो जाती है, पुष्पों की गंध, उसी प्रकार यंत्र निष्पीड़न दुख की तरह केवल दुखी हैं. And what happens then? Those future bodies, they are equipped with your previous subtle body, that is, subtle body means that is with the chitta, all the impressions in the seed form, and also prana, subtle prana. Then only prana is the energy, that tendency to act, and mind also. Mind means active force. Prana gives a momentum, mind is the action. In this way they are one and the same, but little difference according to situations. यंत्र निष्पीड़न दुख की तरह केवल दुखी ही हैं. So the composition of the new body also is a mixture, so one gets into the other. So what happens when the gingerly you put in the crusher to get the oil? What happens when you put the wheat in the grinder to get flour? Are they happy? They are crushed. So everywhere only miseries and miseries. The whole world is called, all these process together, the world is called the house of miseries. Dukhalayam asasvatam. Asasvat means perishable. Perishability means changeable. That is called, every moment everything is changing. So the old one dies and the new one takes birth. That is called perishability. That does not mean to eternal perishability. No. Eternal perishability is total annihilation of your identity. That is only possible when you are united 100% with the absolute truth, which is all-pervading, almighty, all-knower, ever-present, everywhere, which is beyond everything. That is only possible when you are one with it. Or else the moment you come to the dualistic process, that is called world, there is no end to you. All these birth and death is eternal process, and perishability means every moment change. Birth and death means appearance and disappearance. That is called birth and death. Change of phases, that is called perishability. In this way, we have to understand what is perishable and what is imperishable. इसीलिए केवल मरण से न मनोनाश होता है अथवा न प्राणनाशी होता है. So, if you understand this process minutely, analytically, then you can understand
all these changes doesn't mean any destruction, complete destruction. Momentary destruction, of course, happens everywhere. That is called change. Destruction means construction. Look at the farmers. They sow the seeds, new crops. They take care of it so carefully, so hopefully. They take care of it, and in the end they destroy it, means yield the crop. So carefully, with so much love, they grow the plants, paddy plants, wheat plants, and ruthlessly they cut all those. At the end, see what cruelty in love with kindness. The cruelty is hidden. This is called relativity. So this is how the absolute nature is nothing but a farmer or a gardener. And who is the primordial seed? Aham bija pradah pita. I am the primordial seed. Our Tukaram ji says, sings, Adi Bij Akele, the great devotee. He sings, there was one seed in the very beginning, and that seed has become multiplied and many. Adi Bij Akele, the primordial seed, one, that has a many. And in different terms, Veda said, I am one, let me be many. From then only this willpower creates the identity, ego, the supreme ego, and then it gets multiplied or divided or becomes many. One is many, many is one. See, any object, there is many hidden in one, and one also is saturated with all the manys. What do you see? Book. Is it one or many? One book? How can you say one book? It is a one group, not one book. In fact, there is no book. There is no book. Only pages. Yes. Do you see the page here? Is it? Yes. No. Many lines. It has got so many dimensions and colors and differences, so many things, innumerable diversity you can see in this one page. Every alphabet also has got many. One alphabet has got many aspects within it. Isn't it? Each one is different from each others. And in that way, every one has many within it, and that appears as one. And if you see little carefully, it is not one. It is a group, and it has many within it. Everywhere, any object you take, one eye, is this one eye? Have you got black spot and white spot different from each other?
How can you say one eye? Different corners, different sizes, one within other and one in others. Everywhere this is how the world, whole world, everything is confusive. This is called delusive power. Confusion, only confusion. Whole life is nothing but a huh? That is, we are telling something. A puzzle. Whole life, whole world is a puzzle. The creation is a puzzle. इसीलिए केवल प्राण से न मनोनाश होता है अथवा न प्राणनाश ही होता है। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ जल युक्त घट जनों द्वारा न देखा गया भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वासना युक्त मन कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य किरणों के बिना नहीं रहता है, किरण के बिना नहीं रहता है सूर्य, उसी प्रकार प्राण मन के बिना कभी उत्पन्न नहीं होता। सो आफ्टर द डिस्कशन ही गिव्स द conclusion. So in this way, there is no destruction of the mind nor the prana. Don't misunderstand it. There is no decay of prana nor the mind. They remain. How? Just as a water full of pot is drowned in the water, it is unseen now. But is it lost? Because you don't see it, there is water all the time inside it. And water is mixed with the water, and yet it has its different identity. वाटर इन दी पॉट। एक बार ऐसा हुआ, रशिया से बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया आए थे और वे लोग आकर के हिमालय में कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे और आश्रम में पहुँचे। दो हिस्सा हो गए, एक हिस्सा तो बद्री केदार के तरफ चले गए, एक तरफ जमुनोत्री गंगा जी के तरफ आ गए। तो इस तरफ जो आए आश्रम में रहते थे तो चिदानंद जी बोले प्रेमानंद के पास चले जाओ, वो तुमको मदद करेगा। उनके लिए रहने के लिए नैताला में व्यवस्था कर दिए थे, दूसरे उधर होटल में, और रोज़ाना वो आया करते थे कुछ विचार करने के लिए। सब जड़ी बूटी, नेचर, पानी, हवा, सब के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। और उनका मेन पर्पस ये था कि कुछ नया दवाई निकालेंगे, रिसर्च हिमालय से। और उनके अंदर एक विशेष ये था कि हिमालय में हाइट्स में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं पानी के, उसके गहराई में जो जल होता है, वो जल में क्या होगा? हैं? न मिनरल्स तो होगा और सब कुछ होगा, पर वो देखना चाहते थे वो कैसे दवाई के काम में आएगा। तो दवाई का काम में कैसे आएगा उसको परीक्षा करने के लिए वो तालाबों के नीचे के जल ले जाने के लिए उनका कुछ बना कर लाए थे। एक घड़ा जैसे लाए थे, उसमें ढक्कन था और वजन था कि
वो पानी के अंदर जाने लायक हो, और जब नीचे चले जाएगा, जब ये ऊपर से बटन दबाएंगे तब वो नीचे उसका ढक्कन खुलेगा। जैसे वो डुबकी लगाने वाले समुद्र में जाते हैं ऑक्सीजन ले करके, उनका ऑक्सीजन का कनेक्शन तो ऊपर रहता है, तभी तो मिलेगा उनको। इसी प्रकार वो बना कर लाए थे। कहने का मतलब वहाँ वो जो जल होता है वो उसमें प्रेशर कितना और उसके नेचर क्या होगा और उसमें कंपोजिशन क्या होगा जल में, वो टोटली डिफरेंट। क्योंकि हाइट में है 10,000 12,000 फीट हाइट में, 15,000 फीट हाइट में भी तालाब होते हैं, और उसके गहराई से जो जल लेंगे वो साधारण जल का तरह नहीं, वो कुछ विशेष है। वो कैसे रोग निवृत्ति में कामयाब हो, कैसे मददगार हो, उसको वो रिसर्च कर रहे थे। कहने का मतलब वो जो अंदर जो गया घड़ा, एक वस्तु गया, उसमें पानी भरेगा नीचे, तो वो क्या पानी से अलग है या वही है? वही मैं उदाहरण देने के लिए ये कहानी बोल रहा हूँ। तो वही ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। एक घड़ा भरा हुआ अगर पानी के नीचे डाल दिया गया तो क्या वो पानी से अलग है या एक है? उसको हम दूसरे ढंग से समझ रहे थे। एक खाली घड़ा रख दिया बाहर, बाहर रखो, अंदर रखो, कहीं भी रखो, बाहर इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा? वायु होगा और आकाश तो होगा ही। तो उसके अंदर जो आकाश होगा, क्या बाहर आकाश के साथ एक है या अलग है? और वो घड़ा को अगर हम तोड़ भी दें अथवा लेकर के दूसरा घड़ा उसी जगह पर रख दें, तो उसमें जो आसमान रहेगा तो वो बाह्य आकाश के साथ एक है या अलग है? एक होता हुआ अलग दिखता है और अलग होता हुआ भी एक है। उसमें कोई अंतर नहीं होता हुआ हम एक अंतर को क्रिएट करते हैं। और वो घड़ा को तोड़ देने से और या वहाँ से ले जाने से, दूसरा घड़ा वहीं पर रख देने से कौन सा आकाश उसमें मिलता है जब जाता है? आकाश कभी घड़ा के अंदर से बाहर जाता है और अंदर आता है क्या? घड़ा को अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाता हूँ तो कौन सा आकाश को लेकर के जा रहे हो? मुझे कोई बाहर देश से और कहीं दूर, कहीं साउथ से कहीं कोई आते हैं तो स्वामी जी आपके लिए क्या ले आए? अरे मुझे क्या चाहिए, क्या लाना है, जो मर्जी ले आओ। नहीं नहीं स्वामी जी, आपको आप बोलने से हम जरूर लाएंगे। मैं बोलता हूँ बेंगलोर का 5 किलो आकाश ले आना। 5 किलो आकाश कर लाओ। एक पागल को दूसरा पागल अगर कुछ सवाल करता है तो क्या जवाब देगा वो पागल? सरदार ले भी आएगा। हैं? सरदार ले भी आएगा, बोलेगा स्वामी जी मैंने आपका ऑफिस में रख दिया वो 5। उसको तौलो। बोलेगा 5 मंगाया था 10 किलो ले आया। हे भगवान। तो व्यास हमारे वशिष्ठ जी का बोलना ये है
जैसे एक जल का घड़ा पानी के अंदर डुबा देने से वो पानी से अलग नहीं होता हुआ भी अपना अलगपना को कायम रखता है, ऐसे ही हम सब। और जैसे पानी के अंदर मछली, कबीरदास क्या गाए पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आए हंसी रे। पानी के अंदर मीन प्यासी है, वैसे ही हम सुख के सागर में डूबा हुआ हम दुखी दुखी हैं। ये तो सोच की बात है। तो वो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य किरणों के बिना नहीं रहता है, जस्ट एज द sun cannot remain without its rays, so also this prana cannot remain without mind, nor mind can remain without prana. They are one and the same, but differentiation we see. You know the reality of prana and mind. Prana is nothing but vibrations. Energy means vibrations. One energy is transferred into the other, the names change. The same electricity becomes magnet, same magnet becomes the light, same light becomes the fan. Everything changes, but one energy is working throughout. One energy. And every moment there is change in the energy, that's why it can work. So also, mind is nothing but, prana is nothing but vibrations. The first vibration, we call it prana. And then when it activates in different sections, different ways, different places, in different time, so it is named differently. So when it activates in the brain cells, it is known as thought waves. The waves are called, the vibrations create waves. Those waves are called thought waves, and the changing process flow, continuous flow of it is known as mind. So what is difference in mind and prana? When it works through the nose, we call it vital energy or breathing system. The same is thought power, and same is different name it has in different sections of the body. It works differently. So names are different. So we have to understand, mind is prana, prana is mind. There is no difference. So prana cannot remain without mind, mind cannot remain without prana. ज्ञान के बिना उस प्रकार मन प्राणों की कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तितिर पक्षी तृण के बिना पहले तृण के अंगों को नहीं छोड़ता, अच्छा, gives another example. So Swamiji, यहाँ छोटा एक doubt. So prana is not only an entity of the body; it is also existing without the body. It does exist. The prana is universal. Just as the sky is all pervading, so also prana is all pervading. But
we differentiate with every individual as a different Yes, prana. yes. So that prana can exist as an individual when it mixes with the after the body has left. So does it exist as individual or a Yes, whole? it does exist as individual prana in a subtle way as it is taken for granted. As you see it, so it looks to you. It is limited because of your identity. Though it is universal, though it is all pervading, yet it is identified with your ego. So it is limited prana, so it is different from others. Are you different from, pardon? Is it same with the mind? You may call it state of mind. Who differentiates all these? Where, who is the divider? Come on. This is called nature. So for some time we can say mind is divider. Then we have to accept it is the universal nature which does everything. Questioning, answering, understanding or misunderstanding or your dividing or mixing, everything is called nature only. This is how the whole changing process is the nature of the Absolute, and this nature is nothing but unawareness of the awareness. Forgetfulness of the reality. How it happened, Swamiji? Shall I show you? Show me your nose. Please keep it. Now you are aware of your nose and your hand, isn't it? Do you remember your leg? This is how you forget. When one is aware of, the other is unaware of. This is when one is there, the other is not there. This is called forgetting. Another example, your Ramu is not at home. Where is he? Eh? In America. And where is my Ramu? Your Ramu, you know, at America. And which place? Detroit. Pardon? Detroit. 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 Which part of America? Which side? Eastern zone? Northern zone. Nearer to Canada. Yes. Are you remembering now the city Delhi? Yes. How? When you are talking of northern America, where is Delhi? It is forgotten. Where is your home? Gone. This is how we forget. When you attend to one, the other is gone. And this is only seen in relative world, not in the absolute. Then how do you say, when there was no creation, no nothing, no such ideas even, then how this first occurred? This is the very
very complicated and very original question. When your truth is without any spot, it is spotless, niranjana, it is taintless, it is without qualities, without anything other than it. That's how it is Advaita. There is no second possible there. So how did you say there was some idea in the very beginning, I am one and let me be many? Where from this idea came? This is the most important and the first question. You say Maya, the illusive power, the power of the Absolute which creates all this, and that is, you say nature or Maya or call it illusory power, call it as you like, where from it came? How can you imagine such like this? So one answer, it is not at all there. So how we see it? We see it, we see the truth. We see the truth only. The truth sees the truth. It is not you nor I, nor we nor they. Nobody sees anything. Finally, same thing, nobody is confused, nobody is ignorant here, nobody is somebody, there is no body here, there is no identity here, everything is everything. Everything is everything. That is, in other scientific terms, everything is present everywhere in all conditions, at all time. That is called energy. And same terms are different in philosophic world. We said the truth is almighty and all-pervading and all-knowing. Does it not mean the exact same? It is everywhere present at all time, which is beyond time, which is beyond all these relativities, comparison or this or that. It is the presence is ever present, and that is what Gita says, nasato vidyate bhava, na bhavo vidyate sata. The absence is not there. Absence is called when the presence is not seen. Is Ramu absent in the house? Never he can be absent, because he is present. When you compare the places, then only absence is felt. My home at India and his presence in America, there is a difference only in the countries or places, in space, in time, but Ramu is never absent anywhere. Ramu is ever present. You don't see him here, so you have to see there. That is all the same. His presence cannot be denied. By no way, by no means.
see everything at the same time. Is that the word can you say? Pardon? To be able to see everything at the same time. Is that the word? Don't bring that time and don't bring that seeing. Then comes the seer and seen. If you bring the verb seeing, then the object should come, seen object, and then should be seer the karta. You see, there is so many complications. Don't make it more complicated. Simplify it. So one thing, no seer is there, no seen is there, no seeing process is there. Triputi, we say triad. There is no triad. Triad. आदमी का जब बुढ़ापा आता है, हाँ। सडनली नहीं आता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे उसका अंग कमजोर होता है, इंद्रिय कमजोर होता है, अल्टीमेटली डेथ को होता है। इसका मतलब क्या प्राण उसका धीरे 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 विड्रॉ करता है बॉडी से? नहीं, जो है नहीं, ये सडन डेथ तो नहीं होता। नहीं, प्राण धीरे धीरे विड्रॉ नहीं करता है। The express train becomes the बैलगाड़ी, the cart, bullock cart. Express train becomes passenger train. No, the बुलक कार्ट भाई, बुलक कार्ट। मुझे सब पूछते हैं स्वामी जी आपका हेल्थ कैसे है, मैं यही उत्तर देता हूँ। अरे जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 70 डिग्री चढ़ाई पहाड़ को 25 मिनट में चढ़ सकता है जो शरीर, वो आज देखने से घबरा जाता है। गंगा के किनारे जो डेली रात अंधेरी रात में जाकर के डुबकी लगाता था गंगा जी में, उसको गंगा जी को दूर से नमस्कार करता है। उसका आवाज सुन करके बस, हे शब्द ब्रह्म तुमको नमस्कार, गंगा के रूप में। उसमें क्या इफेक्ट होता है? धीरे 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 स्लो होते जाता है। वो जो धीर होता है मतलब धीर होता है, जो चंचलता कम हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब पता चलेगा। प्राण नहीं कुछ नहीं, उसका गति धीमी पड़ जाता है। जो कार चलता है 200 किलोमीटर स्पीड में, वो भी 10 किलोमीटर स्पीड में तो चलता है ना कभी। क्या होता है कार को? क्या होता है? रफ रोड में कार क्या 200 किलोमीटर स्पीड में चलेगा? ये एग्जांपल थोड़ा अलग है ना, ये बॉडी का कार का अलग हो गया, इसका सिस्टम अलग। नहीं, वही सेम प्राण जो पहले तेजी से काम करता था अभी धीमी पड़ गया। धीमी पड़ गया तो क्या हुआ एक्चुअली? अरे काम करने का क्षमता स्लो हो गया ना। वही वीडियो तुम जल्दी में सोते हो हैं? जो पावर है हाँ। वो कहाँ गया? मतलब कोई विड्रॉ कर रहा है उसका, जो प्राण बोल रहा है, कॉन्शियसनेस का उसका जो पड़ रहा है। इंस्ट्रूमेंट फिट नहीं। जब फावड़ा में हम काम करते हैं, फावड़ा ढीला है, टाइट नहीं है, क्या जल्दी जल्दी खोद सकते हो मिट्टी? बोलो। वो इंस्ट्रूमेंट ढीला पड़ गया ना, शक्ति तो वही है उसमें, कुछ नहीं हुआ। हेल्ड अप। यस, प्राण तो शक्ति है, उसमें हमेशा शक्ति ही है। द एटर्नल एनर्जी, ऑल परवेडिंग एनर्जी। आज it works in human bodies,
it cannot work in the ant body. Why difference? Because of the instruments are different. Body, human body is also an instrument where the prana works, and the body of a white ant or ant, small ant, or the body of a bird, it works differently, and human body cannot fly in the air. Why? The same prana, different system, different instruments, different ways of acting. So one is seen speedy, other is slower. Same body, in childhood it was too much active, and in old age it is so dull. Prana is same, but the instrument gets rotten, becomes incapable of doing the work. Incapability is a cooperative capability. The prana, the body, the senses, and the mind, everything together. Cooperative society. That means capability also is cooperative capability. And sometimes the mind becomes faster than the prana. In old age, the mind and desires become young, the body becomes old. The sense of enjoyment becomes deeper, and because it is unfulfilled, and there is no hope of enjoyment more and more. So naturally they get redoubled. When something you pull, it has to, the opposite force also. The centripetal force and centrifugal force. They are relatively measured. When you draw centerward, the same also is made external. Similarly, everything goes on. When we analyze in a particular object or particular functioning in a particular way, then we can understand something. You cannot understand 100%, no way. What is our understanding? Our understanding is based on our previous understanding and future planning and some plan of understanding. Everything, and your situation is different from my situation. Your previous understanding is different from mine. Your future planning is different from mine. So altogether gives you an understanding. The present understanding is dependent on the previous understanding. Isn't it? You have already some ideas. Accordingly, you understand the present situations. So generally, we go with our life considering the past, present and future. But
a man of realization, he has no past, no future, he is not dependent, he lives at present only. That's how he goes beyond the time. So coming to our point, prana cannot remain without the mind, mind cannot remain without prana. They are one and the same. And in the subtle body, in the subtle realm, after the death of the gross body, there will be prana and mind also. The subtle body is composed by 8 elements. So it is called eightfold body, Puriyashtak. And their mind and prana is there, mind is fourfold, and prana, the acting force in a subtle way, and the 5 units of functioning, means perceiving. Perceiving what? Perceiving only the 5 elements and composition of different objects by 5 elements in different ratios. That is called world. So, that 8-fold body, it has got everything in a subtle way. So when it wants to activate grossly, so gross body, an instrument is required for it. And it creates according to the nature of previous impressions of your karmas. That will give you a tendency to go forward, ahead, future body. So that's how all the bodies differ from each other, because nature of your action is different from each other. And one action, your own action in different ways, one action will be different from each other. Say, somebody is standing at the gate and shouting, "Babuji, भूखा हूँ, 2 रोटी दे दो." तो आप गए, फेंक दिए रोटी। रोज आकर के परेशान करता है, चल ले जा, और वही 2 रोटी देना, हाथ जोड़े, अच्छा भूखे हो, 2 रोटी में हो जाएगा क्या? ज़्यादा चाहिए क्या? 2 दूं या 4 दूं? पूछ करके 2 की जगह पर 4 दिए। तो क्या दोनों दान बराबर है? और उसको बुला करके ले आए घर में, बैठो ना, पेट भर के खा लो भाई, 10 दिन का भूखा, खा लो। बैठा दिए, हाथ पैर धुला दिए और बैठा करके पेट भर के खिला दिए। तो क्या उसको खिलाने जो 2 रोटी और 4 रोटी है, और अभी जो बैठा करके चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब खिलाए, तो वो उसको खिलाने का क्रिया क्या समान है? वही एक काम कितने बदल जाता है, मोटिव कितना बदल जाता है, भाव बदल जाता है। तो इसीलिए गहना कर्मणागति कहा गया। आप अपने आप नहीं जानते हैं आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या रिएक्शन होगा। Every action will be reaction, and that will be just opposite to your action, and nature also will be opposite to your nature of action, motive of action. So how
these reactions differ in innumerable ways. Same action, आज आप दे दिए 2 रोटी, कल दिए 4 रोटी, कल दिए आधा फेंक दिए, और दूसरे दिन दे रहे हैं उसके प्यार से थोड़ा चटनी दे करके। सब तो रोटी खिलाना है, धर्म कमा रहे हो, उस धर्म में कितनी अंतर है। कहीं घृणा, कहीं प्यार, कहीं अपनापना। ऐसे ही हर क्रिया का हम अगर देखेंगे अच्छी तरह माइन्यूटली, तो ये बड़ा भयंकर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि कुछ नहीं सोच सकता है। हम पागल हो जाएगा आदमी। हमारा ये आदत है ही नहीं। अच्छा, कालिदास, कुछ तो कॉन्टेस्ट आना चाहिए। चाय पिए। मेरे टाइम तो हो गया, अभी क्या टाइम है चाय पीना। तो वो कौन थे हमारे, तो प्रश्न करता रहे नहीं। हिम्मत जवाब दे दे। अच्छा, हिम्मत जवाब देगा वो। हम किस कॉन्टेस्ट में बोल रहे थे उसको? वो तो पूछा था क्या भगवान को देखा है? हाँ, भगवान को देखा है क्या? वो कालिदास से एक महामूर्ख था, जिसको हम महापंडित और बड़ा कवि के रूप में सारा दुनिया स्वीकार करता है। महामूर्ख था, एक पेड़ के शाखा में बैठ कर के यहाँ इसको जड़ से काट रहा था। हुआ क्या, वो महामूर्ख को कोई पंडित लोग देखे, और वो पंडित लोग किसी राजकुमारी का बदला लेने के लिए घूम रहे थे। ये पंडितों के साथ एक राजा का कोई लड़की थी, विद्वान थी वो, सारे शास्त्रों में पारंगत। उसके साथ कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। और राजा प्रण किया था, जो इसको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ ही इसको शादी करवाऊंगा। जैसे सीता जी का और हमारे दमयंती की, कितने सब राजकुमारी का कुछ होता है, प्राण रखते हैं राजा लोग। तो ये क्या किया, राजा लड़के का उम्र हो गया तो बोले चलो स्वयंवर करते हैं। तो पंडित लोगों को बुलाया गया, शास्त्रार्थ करो। एक से एक बड़े विद्वान आए और उनको सबको वो लड़की हरा दिया। सब मुँह को नीचे करके काले मुँह में चले गए। और जब सब कभी इकट्ठा, बात फैला बहुत, अरे ये कैसे लड़की है, उसके साथ बात नहीं कर सकते हैं। सब पंडित इकट्ठे हो गए। सब सोचे इसके बदला देख करके छोड़ेंगे, इसको महामूर्ख के साथ शादी करवाएंगे। प्लान किए तो ढूंढ रहे थे महामूर्ख। देखे ये कालिदास बैठ कर लकड़ी काट रहा है। अरे क्या कर रहा है तू? मैं लकड़ी ले जाऊंगा ना, घर में सूखा लकड़ी चाहिए, नहीं तो चूल्हा कैसे जलेगा। तो वो कहे इधर नीचे आ, तेरे को राजा बुला रहा है। वो डर के मारे उतरा। हाँ बोलो महाराज, क्या चाहिए? कौन राजा, कैसे, क्यों बुला रहा है? तेरे को बहुत कुछ इनाम मिलेगा। वो ऐसे तुम जैसे आदमी को ढूंढ रहा है राजा। हम तो राजा की तरफ से आ रखे हैं, चलोगे? धन मिलेगा। हाँ,
हाँ चलूँगा। उसको झूठ मूठ कैसे परसुएड करके ले आए, उसको स्नान उन करवा दिए। बड़ा सुंदर सफ़ेद ड्रेस पंडित लोग जैसे होते हैं, और चंदन तिलक लगा करके उसको मुंडन करके। वो ऐसा क्यों कर रहे हो? न राजा के पास जाना है ना, ऐसा करना पड़ता है, महामूर्ख सब मान जाता है। तरीके तो वो चोटी चाटी रख करके जनेऊ डाल करके वहाँ पंडित बना दिए और बोले राजा बोल रखा है ज़्यादा बात नहीं करना, तेरे को तो बात करना नहीं आता है, उधर बात नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना। अच्छा, और फिर राजा के साथ क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, वो तो खाली तेरे को देखने से वो सब कुछ कर लेगा, चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ है ना। हाँ, तुम कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, खाली देखते रहो क्या हो रहा है। तो वो मान गया, डर के मारे भी मान रहा है, राजा बुला रखा है, जैसे कह रहा है ऐसा करना पड़ेगा। पंडित लोग उसको ले चले आगे आगे, जाकर राजा के पास पहुंच गए, राजा को खबर दे दिए, हमारे जो आदि गुरु हैं, पंडितों का पंडित, उनको हम ला रखे हैं, महापंडित, महापंडित, एक महा से कैसे होगा, महापंडित, गुरुओं का गुरु, वो महाविद्वान, तो उनको हम बुला कर लाए, आ नहीं रहे थे, बड़ा मुश्किल से बुलाए। वो तपस्या में हैं और वो हमेशा मौन रखते हैं, चिंतन मनन निध्यासन करते रहते हैं। हम तो बहुत विनती के उनको ले आए। उनके साथ राजकुमारी को, हमको बड़ा दुख लगा कि राजकुमारी को कोई जवाई नहीं मिल रहे, उनको ले आए हैं। उनके साथ राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ हो जाएगा, पर मौन भाषा में। वो मौन भाषा के ऊपर आया था, साइलेंस टॉकिंग, हाउ वन स्पीक्स विदाउट स्पीकिंग। तो बैठ गए, सभा बैठ गया, और जज तो ऑडियंस है, अपने आप जजमेंट हो जाता है। राजकुमारी बैठ गए सामने, और पंडित जी महापंडित को बैठा दिए सामने, आमने सामने, और बैठ रहा है। वो महामूर्ख को डर क्या लगेगा, कुछ डर नहीं, भय नहीं, बैठा है, जानता कुछ नहीं है, यहाँ क्यों मेरे को बैठा है, क्या करना है क्या नहीं करना, बोलना नहीं, और मन में बैठा हुआ, कुछ नहीं करना, बैठो। कुछ अगर कर बैठेगा, कोई मार देगा तो दो डंडा, चुप बैठो। बैठा, उस राजकुमारी बैठ गई सामने, हो गया। हाँ, अब शास्त्रार्थ चालू रहे हो, ठीक है। तो पहले कौन प्रश्न करेगा? तो पहले तो राजकुमारी को करना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी तो मौन है, और राजकुमारी को बोलना नहीं चाहिए, मौन भाषा में इशारा से बात करेगी वो। पहले करने दो, राजकुमारी को बोलो, प्रश्न पूछेगी। तो राजकुमारी उनको देख करके सामने, क्या हुआ, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जोर से अंगुली उठा दिया। तो अपने आप कुछ बोलना नहीं चाहिए। वो अपने आप समझ गया मूर्ख कि कल की छोकरी, हाँ, और इतनी हिम्मत, मेरा एक आंख फोड़ देगी। जोर से बोला, मैं तेरा दो आंख फोड़ूंगा, तू क्या समझती अपने को, हाय।
2 आंख फोड़ूंगा। तब सब ताली मार दिए। एक ब्रह्म वो कुछ कर ही नहीं सकता है। जब 2 होगा प्रकृति और पुरुष, तभी तो काम होगा, दुनिया बनेगा। एक में क्या होगा? वो निकम्मा, कुछ नहीं कर सकता ब्रह्म। सब ताली मार दिए। पंडित जी जीत गए। अच्छा, तो उसके ऊपर सवाल हुआ क्या? अरे 2 से थोड़ी होता है, 2 क्या कर सकते हैं? जब पंचभूत होगा तब तो होगा, पंचीकरण होगा तभी तो दुनिया बनेगा। लड़की कर दिया। तब वो सोचा, हाँ मैं तेरा 2 आंख फोड़ने के लिए बोला तो तू मेरे को थप्पड़ मारेगी? अच्छा, मैं ऐसा कसूंगा ना एक मुट्ठी तो तेरा नानी याद आएगी। तब सब ताली मार दिए। उसको बोलते हैं, अरे पंचीभूत पंचीकरण में कुछ नहीं होता है। वो जब पंचीकरण होगा, इकट्ठे होंगे तभी तो मिक्सर होगा, तभी तो दुनिया बनेगा। खाली 5 भूत क्या दुनिया को बना सकते हैं? अलग 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 कुछ नहीं करेंगे। 5 अंगुली इकट्ठा होगा तभी तो ताकत तथा मुखी बनता है। पंचीकरण होगा पंचभूतों का तभी तो दुनिया बनता है। सब मार दिए ताली। हो गया, लड़की हार गई। वो ताली के ऊपर ताली। हाँ जी। तब फिर और एक सवाल भी था। वो लात उठाया था। तो जब तीनों में बेचारी हार गई, शर्मा गई, तो उसको शादी राजा डिक्लेयर कर दिया, हो गया। तो अब वो सोचता है मेरे क्या कर रहे हैं ये लोग, और सब शादी ब्याह सब होने लग गया। और हनुमान का समय आ गया। हनुमान जी का क्या होता है? हनुमान है हनीमून। हाँ, हनीमून। सुहागरात के लिए लड़की अंदर बैठी हैं और पंडित जी को बड़ा ड्रेस डांस करके, वो तो मौन तब था, अब यहाँ कहाँ मौन रहेगा। वो अंदर गया तो वो राजकुमारी सब संस्कृत में बात करती, और उसका बात करने का तरीका, भाई पढ़ी लिखी राजकुमारी है, ये तो महामूर्ख कहीं लकड़ीहार था। इसका व्यवहार को देख करके, बातचीत को देख करके राजकुमारी समझ गई, अरे ये तो चाल था पंडितों का। समझ गई, और समझ कर जो मन मर्जी गाली ठोकी, न रहे कहाँ से महामूर्ख इधर आ गया। हाँ, इतना गाली दी कि महामूर्खों को भी समझ आ गया गाली। तो उसको दिल को लगी, ये छोकरी क्या समझती है अपने को, मैं मूर्ख हूँ, ये पंडिता हो गया, इसको दिखाऊंगा। मूर्खों का हट बड़ा खतरनाक। त्रिया हट तो खतरनाक होता है। हट 4-5 किस्म के होता है। एक बाल हट, बच्चों को समझाना कठिन हो जाता है, जो मन में आ गया वही करेंगे। और एक राजहट, राजा के मन में जो आया उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है। और एक जोगहट, जोगी जो समझ गया ये करना है, उसको समझाने वाला कौन है। और एक त्रियाहट, देखो स्त्री का हट के कारण महाभारत हुआ, रामायण हुआ, क्या नहीं हुआ। एक सोने का कहीं हिरण होता है,
उसको मेरा उसका छाला चाहिए? क्या मूर्ख सीता थी, है? तो इनका जो हट हो जाता है उसको कोई बदल नहीं सकता है। अब मूर्खों का भी एक हट होता है, जो दिमाग में आया वही करेंगे, उसको समझाना क्या, वो समझते नहीं कुछ, मन में जो आया वही करेंगे। तो गया, ये छोकरी को मैं दिखाऊंगा। गया जंगल में, वो पंडित लोग तो गए खुश हो करके, खूब इनाम किताब लेकर राजा से। और फिर ये गया जंगल में, कहीं एक छोटा सा मंदिर था, वो शारदा माता जी का था। जंगल में दुर्गा वन देवी का होता है। उधर जा करके उधर बैठ गया। जब तक मुझे ये छोकरी को ठिकाना लगाने के लिए ताकत नहीं मिलता ना, हे देवी, मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। मेरे को कुछ ताकत दे। वो ज्ञान को क्या होता है, कुछ होता, कुछ नहीं जानता। तो मुझे कोई ताकत दे भगवती, वो छोकरी को मैं पाठ पढ़ाऊंगा। इतना में वहाँ कोई था, कोई एक क्या कहते हैं तांत्रिक जंगल में घूम रहा था। किसी वो नरवेद यज्ञ कर रहा था, किसी को पकड़ के ले जाना है, उसको बलि चढ़ाना है। देखा कोई इधर बैठा है जंगल में अकेला, क्या कर लेगा मेरा। जा करके पकड़ लिया, उठाया तलवार, जा करके आवाज किया। वो आई बीजाक्षर है सरस्वती का। वो आई इतना जोर से दिल से बोला तो देवी प्रकट हो गई। और उसी ऐम को देवी उसके मुंह में लिख दी, हाँ, उसके जीभ में लिख दी। महापंडित वहीं से फिर बुद्धि सुधर गई। बुद्धि के तो आराध्य देवी है भगवती, और भक्त युवाग्रवासिनी, तो वो तो बैठ गई खुद उसके जीवा में बीजाक्षर के रूप में। जो सरस्वती प्रसन्न हो गई तो वो रहेगा क्या। मूर्खों का पूर्व कर्म भी है, कुछ था, महामूर्ख के रूप में जन्म हुआ था किसी पाप के कारण, लेकिन पूर्व कर्म जो उसका है उसको ये ज्ञान दिलाया और वो तब समझ में आ गया। अब तो वो तो चला गया कहीं, वो जो तांत्रिक डर गया, वो देवी प्रकट हो गई। तो फिर तांत्रिक उधर कहाँ खड़ा रहेगा, भाग गया वो। और फिर इसको सब कुछ समझ में आ गया एक पल में, और जैसे पर्दा खुल गया बस। तो फिर आया और जवाब देता है श्लोक में। और उसमें 10 अर्थ, एक श्लोक का 50 अर्थ निकल जाता है। वो पद का लालित इतना मधुर शब्द, उसका एक उदाहरण देते हैं। वो जो भोजराज के 9 रत्न थे, नवरत्न, उसमें कालिदास था। भोजराज के विक्रम हैं, हाँ, विक्रमादित्य मान लो, हैं, हाँ, मान लो वह भोजराज था वही। तो नहीं, उज्जैन का राजा भोज दूसरा था जिसको सिंहासन मिला था विक्रमादित्य का, बाद में, बहुत बाद में। तो ये उसमें एक रत्न सबसे बड़ा कवि है, सबसे बड़ा पंडित, और ये
एक बार राजा नवरत्नों के साथ जा रहा कहीं परीक्षा के लिए, सब कालिदास के ईर्ष्या करते थे, इसको राजा बड़ा मानता है। तो राजा पूछा किम तत्, किमे तत्, क्या ही है? संस्कृत में पूछा। बाहर सामने एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। तो एक जो बाणभट्ट जो महान विद्वान दूसरों के अंदर से, तो वो कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, सूखा लकड़ी आगे पड़ा हुआ है, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। तो कालिदास को पूछे किमे तत्, नीरस तरुवर पुरतो भाति। वही भाषा, वही चीज बोल रहा है। नीरस, शुष्कम कितना कठोर शब्द है उसी का, नीरस रसहीन। तरुवर लकड़ी, पुरतो भाति, प्रकाशित हो रहा है सामने। ये भाषा कालिदास का, तभी तो विश्वविख्यात कवि हुए। भाषा में कितने सरलता, कितने मधुरता और कितने मतलब स्पष्टता, वो कालिदास का महत्व था। है वही चीज। और उनका भाषा तभी जैसे शेक्सपियर हुए, ऐसा कालिदास का बराबरी कोई नहीं करता। यस। और वो जब कुमार संभव उनका देखना, क्या उदाहरण, क्या भाषा, क्या सोच है। कैलाश का वर्णन देखना, प्रकृति का वर्णन का भाषा देखना संस्कृत में, वही तो महानता होता है। तो कहने का मतलब ये सारे वैसी जवाब देता स्वामी जी, वो जब गाली दे रही तो वैसी जवाब देता, तो ये जंगल जाने की जरूरत नहीं रहता। कौन? कालिदास को जब उसकी बीवी तो उसको गाली दे रही थी कि तू मूर्ख है, ये जब भी उसको ऐसी सिग्नल दे देता तो हो जाता। परंतु वो तो मुंह खोल दिया, वहीं तो मौन था वो, राजा के सामने बोलना नहीं। वो बोले थे, वो लड़की के सामने, लड़कियों को मैं डरता हूँ क्या? और वो बोल रही थी भी, मुझसे बोल रहा था, पहले तो यूं ही कर रही थी, मुझसे बोलो तो ये भी। कोई पूछा स्वामी जी सरदार को कालिदास कौन है, कौन था जानते? इंटरव्यू में बोला हाँ वो एडिडास का भाई कालिदास। किसका भाई? एडिडास। हैं? आदिदास, आदिदास है ना, मतलब जूता का बनाता है, आदिदास। हरिदास? चाइना की कंपनी है एक, आदिदास, ADIDAS। अच्छा, आदिदास। उसका भाई कालिदास। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान